So we'll be discussing about the neurogenic bladder because that is which concerns. जो हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, जो हमारी सोमैटिक सप्लाई होती है वो एक्सटर्नल सिंपैथेटिक है, तो ये सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स पे ही काम करेगा। बड़ा सिंपल है। See, the control over bladder is very important for very obvious reasons. इसमें कोई कहने की बात नहीं है ना? As you see, जब बच्चा पैदा होता है तो he does not have any control on his bladder. तो बेसिकली एक सेक्रल रिफ्लेक्स से वो चलता रहता है ना, कि ब्लैडर से सेक्रम तक गए, रिफ्लेक्स नर्व गई, फिर आई, फिर वापस हो गई। जब वो फुल हो गया तो उसने एम्प्टी कर दिया, फिर हो गया। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज द हायर सेंटर्स टेक ओवर, तो फिर हमारा ब्लैडर कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, so bladder के basically if we see there are two functions. Bladder is in two modes. ठीक है, one mode is the storage mode. ठीक, most of the time it is in the storage mode. The bladder is storing the urine which is being formed, and then it shifts to voiding mode. ठीक है, वो मतलब 3-4 बार on average 4 to 5 times in a day we void our filled bladders. So the bladder has to alternate between storage mode and voiding mode. Most of the time it is in the storage mode, and 3-4 times in a day it goes into the voiding mode. So how all of this is done? कैसे सब कुछ ये कंट्रोल होता है? Before we proceed further, the disorders of the bladder function are divided into two. One is a neurogenic bladder, which means the problem is with the nervous system which controls the bladder function. आपका कॉर्ड हो गया, आपके हायर सेंटर्स हो गए, आपका पॉन्स हो गया, आपकी नर्व्स हो गई। एंड सेकंड आर यूरोलॉजिक कॉजेज विच वी नो, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो गया, प्रोस्टेटिक सीए हो गया। सो we'll be discussing about the neurogenic bladder because that is which concerns us, because urologic problems they usually do go to the urologist, which we have a proper department here. So what happens is, before we proceed with different types of neurogenic bladder, we should know the basics of bladder innervation कि होता क्या है. So this is the bladder and this is the urethra which I am trying to show here. So we have an internal sphincter here, we have an external sphincter here. ठीक है, and the bladder has muscarinic receptors, पहले वो कर देते हैं, which are M3, and the bladder has adrenergic receptors which are beta 3. ठीक है, and then bladder has this internal sphincter which has alpha 1 receptors, and this external sphincter which has nicotinic receptors. Okay, this bladder function we can divide it into two. One is autonomous, these are autonomic functions which we cannot control, ये bladder अपने आप करता रहता है. So this, उसका हमारे पास एक होता है sympathetic supply, एक होता है parasympathetic supply. This internal and this bladder, whole of this is involuntary. ठीक है, एवरीबॉडी अपने आप करती रहती है, हमें नहीं ध्यान देना कि अभी स्फिंक्टर इज क्लोज एंड द डिट्रसर मसल इज रिलैक्स्ड। ये संभव ही नहीं है। 24 आवर्स वी कैन नॉट जस्ट अप्लाई आवर माइंड टू दैट ओनली कि द ब्लैडर इज रिलैक्स्ड, द ब्लैडर इज कॉन्ट्रैक्टेड। नो, एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन एन ऑटोमेटिक मोड। कृपा है भगवान की, ही इज डूइंग इट सो परफेक्टली। बट समटाइम्स व्हेन द प्रेशर इज वेरी हाई, व्हिच ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस, तो वी हैव टू पुट अ वॉलंटरी कंट्रोल सो दैट वी डू नॉट बिकम इनकॉन्टिनेंट। सो जो हमारा वॉलंटरी कंट्रोल होता है, जो हमारी सोमैटिक सप्लाई होती है, वो एक्सटर्नल इस पे होती है। So all of this practically is not under our control, it is involuntary. और जो नीचे जो external sphincter है, this is under our voluntary control. ठीक है, so that we can even if the pressure is high, we can stop urinating. We don't become incontinent. अब आगे चलते हैं कि ये यहाँ से कैसे सप्लाई होती है, कॉर्ड से। Forgive me this, मेरी बहुत अच्छी वो नहीं है। So there are two centers. एक बड़ा सिंप्लीफाई हम कर देते हैं। एक थोरैक्स में होता है और लंबोथोरैसिक होता है। With somewhere around you can say T10 to L2. कोई ऊपर भी बोल देता है, कोई एक नीचे बोल देता है, but roughly this is this. So this is our sympathetic supply. Sympathetic supply is basically a storage mode system. Sympathetic जो एक्टिविटी है वो ब्लैडर को स्टोरेज मोड में रखती है। तो कॉमन सेंस, व्हाट इज अ स्टोरेज मोड? आप बताओ क्या होना चाहिए? इफ यू वांट द ब्लैडर टू होल्ड यूरिन, इट वेरी सिंपली मींस दैट द डिट्रसर मसल शुड बी इन अ रिलैक्सिंग मोड, रिलैक्स कर रही होनी चाहिए, एंड योर स्फिंक्टर शुड बी क्लोज्ड।
कॉमन सेंस है, बिकॉज वी आर सिंप्लीफाइंग इट कि जो thoracolumbar सप्लाई है दैट इज अ सिंपैथेटिक सप्लाई एंड उसका काम होता है कि इट इज इन द स्टोरेज मोड. So storage mode means that the bladder wall should be relaxed and the sphincter should be contracted. So जब यहाँ से ये जाती है it goes to the hypoglossal nerve. यहाँ पे plexus होता है, plexus से फिर आगे hypoglossal nerve चली जाती है. It goes to the beta 3. ठीक है, बिकॉज इज ए सिंपैथेटिक सिस्टम, इसमें नॉरएड्रेनालिन सीक्रेट होता है एंड इट गोज टू द अल्फा 1. सिंपल बात है, क्योंकि सिंपैथेटिक है तो ये सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स पे ही काम करेगा. बड़ा सिंपल है. आगे देख, thoracolumbar is storage mode. It is a sympathetic system. Sympathetic system means it will act on beta or alpha receptors only. So the bladder has beta receptors, beta 3. So when this is activated, the bladder wall remains in a relaxed mode. It acts on the beta 3 receptors and the bladder is in a accommodative mode. यार ठीक है, बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है. And similarly, it acts on the alpha 1 receptor at the internal sphincter and keeps it closed. सिंपल सी बात है. तो ये आपका हो गया sympathetic system, बिल्कुल सिंपल. Thoracolumbar is sympathetic. It keeps the bladder in the storage mode. बड़ा आसान है, सिंपल सी बात है. Storage mode means the balloon should be in a relaxing mode and the outlet of the balloon should be closed. ये दोनों काम करती है. उधर अल्फा 1 पे काम करके उसको बंद करती है, उधर उसको रिलैक्स कर देती है. अब इसका ऑपोजिट इन द वॉइडिंग मोड, कि व्हेन वी हैव टू गो टू द वॉइडिंग मोड, दैट सेंटर इज बेसिकली इन द sacral area, S2, S3, S4. This is parasympathetic. So this is a parasympathetic system. Parasympathetic is a voiding mode. Now the body feels that yes, we have to evacuate. So now this system becomes active. So what is this? This becomes active. This acts on M3. Because this is a parasympathetic system, ये acetylcholine से work करेगा. Sympathetic was noradrenaline, this is acetylcholine. ये muscarinic receptors पे यहाँ पे जाके act करेगा and now it will tell the bladder to contract. There are some amount of receptors here in the internal also which help it to relax. Though most of the relaxation is done by the feedback of this system to the sympathetic system कि relax हो जा. But some amount of direct parasympathetic fibers are there here also in the internal this, but more important is its signal to the sympathetic system कि इसको relax कर दो. What the point? So ये इसमें शिफ्ट करता रहता है. एंड दिस पोडेंटल नर्व ऑल्सो, ये वाली होती है पेल्विक नर्व. दीज आर कन्वेड थ्रू द पेल्विक नर्व. अब जो नीचे वाला बचा हुआ है, दिस इज सोमैटिक, दिस इज वॉलेंटरी. ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ से जाती है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे नीचे एक्सटर्नल पे काम करती है. इसको हम होल्ड कर सकते हैं. दिस इज अंडर आर वॉलेंटरी कंट्रोल. ये सिंपल सा चीज हो गया, तो इसको बड़ा आसान सा कर देते हैं. अब एक चीज इसमें रह गई. वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, बट देयर इज अ सेंसरी nerve also, which has to, how does the brain or the spinal cord know that the bladder is full or not? So now there is a sensory nerve also here, which is a pelvic nerve. उसको भी pelvic nerve ही बोलते हैं. वो bladder से यहाँ से sacral area से आके ऊपर फिर वो मैसेज दे देती है. Because the message has to be conveyed to the brain, then only the brain will act, na? So this nerve also enters the sacral area and then it goes up, and it on the way up it gives information to the sacral area as well as to the sympathetic area also. It is relaying here also. ऊपर जाते जाते वहां पर भी हाय हाय टाटा बाय बाय कर रही है किसी. This is the state of affairs in the bladder. So it is telling that usually these fibers are usually relayed up through कुछ posterior column से और कुछ spinothalamic tract से, उनके साथ जाते हैं ये fibers spinothalamic tract में और उसके अंदर ये चले जाते हैं. तो यहाँ तक I think so long the things are clear. अब ये तो हो गया spinal और bladder के लेवल पे. अब इसको एक बार से सिंपल सा वो कर देते हैं. Right now you have just evacuated your bladder. The bladder is empty in a normal person. So this nerve, sensory nerve in the bladder, is giving the signal to the spinal cord and through the spinal cord to the brain that the pressure is very low. We have to be in the storage mode. So this goes up and this information is relayed to the parasympathetic and sympathetic also in the thoracic area. This thoracic area now tells the sympathetic system कि भैया be in a storage mode. Be in a storage mode. The
adrenergic system becomes active, telling them to be in a storage mode. The beta 2 receptors are there stimulated, so the bladder is in a relaxing mode, and it also stimulates the alpha receptors, so the internal sphincter is closed. And because the pressure is very low, you don't have to do anything to the external sphincter. जरूरत ही नहीं है. Only when the pressure is very high और यहाँ से you can become incontinent, then only you have to close this. इसको जरूरत ही नहीं है. So I think things are very clear. Now there is a time as the pressure rises, the bladder starts to fill. Now there is a time when the message will go that the bladder is full now. Please do something about it. So now this message is conveyed here to the parasympathetic system, and also through here it is conveyed to this system also. So now this, they change from the storage, it is to the voiding mode. The information is conveyed to the sympathetic system. भाई बहुत हो गया अब, ठीक है? So you do something about this internal, which is under your control. Alpha receptors are there, है ना? Make it relax. And this muscarinic receptors will act here and ask the detrusor muscle to contract. And also they have some fibers here in the internal area also, and they will ask them to. So far so good. अब खाली यहाँ तक कहानी नहीं होती है, अब इसके ऊपर भी एरिया है, बिकॉज अगर खाली यहीं तक रहेगा तो ठीक है, देन इट विल बी एन ऑटोमेटिक सिस्टम. अगर हम खाली यहीं पे छोड़ दें तो व्हाट विल हैपन इज वी डोंट हैव एनी हायर मेंटल कंट्रोल ओवर इट, है ना? ये आपस में दोनों भाइयों ने मिलकर कर दिया, और मैं एज अ एंटिटी जो हूं, आई एम माय ब्रेन, व्हाट आई एम थिंकिंग, मेरे तो हाथ में कुछ है ही नहीं भैया, इसने काम कर दिया, इवैक्यूएट, आई एम टॉकिंग टू यू एंड सडनली आई फील माय पैंट्स आर वेट, तो हो गया काम मेरा. तो गॉड is great. So he has made certain other adjustments also, so that the life becomes easier for us and we are not embarrassed socially.